Vamos a empezar, ¿va? ¿Podrían los que tienen problema, pueden prender su cámara, por favor? Hola a todos. ¿Quieren leer algo? ¿Había algo que hacer o no? Nos dejó un texto. ¿Perdón? Nos dejó un texto con una lista de verbos. Ok. ¿Hicieron algo? Ja, A ver, ¿puedes empezar, por favor? Eve? ja. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और धीरे चलती हूँ। कभी-कभी मैं पार्क में दौड़ती हूँ और फिर बैठती हूँ। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाना गाती हूँ और कभी नाचती हूँ। घर आकर मैं चाय बनाती हूँ या कभी-कभी चाय बनवाती हूँ। मैं अपने दोस्तों को मैसेज भेजती हूँ और उनसे बोलती हूँ। हम हंसते हैं और कभी-कभी मैं तेज बोलती हूँ जब मैं एक्साइटेड होती हूँ। दिन में मैं नई चीजें सीखती हूँ और कभी दूसरों को सिखाती हूँ। मैं किताबें देखती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ। कभी-कभी मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर ही आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने काम में मेहनत लगती हूँ और मुझे लगता है कि मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। शाम को मैं बाजार जाती हूँ, चीजें करती हूँ और कभी पुरानी चीजें देखती हूँ। मैं एक्टिविटीज में भाग लेती हूँ और अपनी जिंदगी को एंजॉय करती हूँ। Muy bien. ¿Alguien más? No. Ok. A ver, Giselle. Sí, quien sea. Estás en mute. Can you hear me? Oh, Sí. ¿pueden escuchar? Perdón. Sí. तो ये कहानी हमारी कहानियां है ना? Lo que sea hindi. तो हर शनिवार को मेरा पड़ोसी घास काटता है। जब वो ऐसा करता है, तब उसकी पत्नी मेरा घर आती है और अपने पति के बारे में बहुत शिकायतें करती हैं। माफ कीजिए, करती हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कभी-कभार हिस्सों के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अभी हमेशा जब मैं अपने कुत्तों और बिल्ली को पार्क में ले जाती हूँ, तब मैं अपने पड़ोसी की पत्नी को मेरे साथ जाने के लिए बुलाती हूँ। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कुछ समय दूर से बिताते हैं और और वो लड़ाई नहीं करते हैं। पता नहीं ये सच है। शादीशुदा की जिंदगी या शादीशुदा जिंदगी थोड़ा मुश्किल लगता है।
उहुं, ठीक है। कोई गलत है? ओ, नहीं, एक दो थोड़ा सा ना, एक या दो जगह। जैसे हाँ, शादीशुदा जिंदगी और शादीशुदाओं की जिंदगी puede ser। शुदा, ठीक है। शिकायतें करती है, está bien। Ajá। घास कटाती है और काटती है। काटते हैं और काटते हैं। Corta o pide que alguien más corte. Katana es pedir que corten y katna es cuando uno corta en ese caso el pasto. Ujú. ठीक है। बहुत अच्छे। Cas, ¿quiere decir algo? मेरा दिन मैं 4 बजे जाती हूँ और मैं 7 बजे जिम जाती हूँ। बट मैं नहाती हूँ और नाचती हूँ। ¿Qué es nashti? Bailar, Ah, nachti हूँ। Ajá, नाचती sí, ajá, nachti हूँ। Muy bien। नाचती हूँ। मैं 9 बजे बस से स्कूल जाती हूँ। मुझे इजलास में पसंद है, इसलिए मैं संगीत सुनती हूँ जब islas me chaltico. Tengo duda si es el a través es me o si hay otra forma de decir como A caminar a través través. de, ¿qué quiere decir? ¿Pasas por allá? ¿A eso te refieres? Ajá, como caminar Entonces, entre ajá, chalna través. es caminar y guzarna. Guzarna es pasar o pasear en pas, Ok. ¿no? जब मैं isla से गुजरती हूँ, cuando paso por ahí। Ajá. Ok. मैं laboratory में खाती हूँ, मेरी दोस्त के साथ खाना खाती हूँ और आप बहुत हंसते हैं। गुरुवार को मैं हिंदी पढ़ती हूँ और उसके बाद थिएटर और सिनेमा जाती हूँ। बहुत अच्छे। Sofi, ¿quieres leer algo? हाँ। हिंदी सीखना मुश्किल है, लेकिन आजकल कई ऐप्स है। ऐप्स बोलने को आसान बनाते हैं, लेकिन वे टीचर के जगह नहीं ले सकते और क्लास भाग लेती। Muy bien। आप टीचर की जगह नहीं ले सकते, की जगह लेना. De repente salen los verbos, ¿no? En tarea de cada uno de ustedes. Vayan apuntando eso. की जगह लेना, tomar lugar de. Tomar lugar de. Sustituir, digamos. Eso sería. कोई किसी की जगह नहीं ले सकता. Nadie sustituye a nadie, ¿no? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता. टेक्नोलॉजी लोगों की जगह नहीं ले सकती. टेक्नोलॉजी लोगों की जगह नहीं ले सकती. ये पुनः रखी. लोग की जगह नहीं ले सकते. Pueden leer todos, ¿no? टेक्नोलॉजी लोगों की जगह नहीं ले सकती. La tecnología no puede tomar lugar de, o sea, no puede sustituir a la gente y la gente no puede sustituir a la tecnología. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan? Era yo, ¿no? Soy o estoy, para primera persona. Y en pasado sería था o थी. Era o estuve, o fui también puede ser. हो
थे. He o ha. ¿Ok? Entonces, who es para primera persona en presente. Tha o thi sería para segunda persona. Perdón, tha o thi para primera persona en pasado. Mejor sería, a ver, un segundito. Aquí sería. Ok. ¿Se acuerdan, no? Me. Y aquí era la conjugación del verbo hona en presente. मैं हूँ, तुम हो, वह है, हम, वे y आप हैं. En pasado es था o थी o थे. Para primera persona, mujeres dirían मैं थी, hombres diríamos मैं था. तुम थी, तुम थे. वह थी, perdón, वह थी, वह था, हम, वे, आप, थी y थे. Y los usos son los mismos que del presente, solo que sería en el pasado. El hona como verbo principal en presente se usa para descripciones permanentes más o menos, ¿no? मैं इंडियन हूँ या मैं आर्किटेक्ट हूँ, ¿no? O también cuando es estar. मैं खुश हूँ, मैं México में हूँ. O sea, ahí se usa hूँ. Lo mismo se puede decir pasado también. Solo que algunas cosas solo se usan en presente, ¿no? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, मैं México में हूँ, puedo decir, कल मैं México में था. Ayer estaba en México. कल मैं México में था. तुम पिछले महीने और पिछले सप्ताह कहाँ थी? ¿Dónde estabas la semana pasada? मैं पिछले सप्ताह México City में थी o था. Okay. Entonces, muy simple, muy simple. मैं हूँ, yo soy. मैं थी, voy a usar en femenino porque aquí la mayoría es femenino, ¿no? Yo soy, o yo era o estuve o fui. तुम हो, तुम थी. Aquí va un punto en थी. वह है, वह थी. हम, वे, आप हैं. हम, वे, आप थी. Aquí está. Aquí pongo. Y y y y. De hecho, es bastante fácil el pasado. Casi todo es thi. Aquí N es nasalizado nada más. No es thin, es thi. मैं थी, तुम थी, वह थी, हम, वे, आप थी. Femenino todo es thi. Solo plural se vuelve nasalizado nada más. ¿Ok? Ajá. Vamos a practicar un poquitito de eso. Solamente unas preguntas. जैसे तुम संडे को कहाँ थी? प्रकाश, तुम संडे को कहाँ थी? तुम रविवार को कहाँ थी? ¿Dónde estabas el domingo? मैं मेरा घर में थी. Muy bien. मैं अपने घर में थी. En vez de मेरा, pueden decir अपने. Porque
cuando la persona que está diciendo es la persona que posee, ¿no? En vez de decir मैं मेरा, podemos decir मैं अपने घर में थी. Ajá. Para no repetir मैं मेरा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, pues podemos decir अपना. Muy bien. Ana जी, तुम सैटरडे को कहाँ थी? ¿Dónde estabas el sábado? Ya estamos. Sí, estás en mute. Oh, मैं Saturday हाइकिंग ट्रैकिंग में थी. ओके, मैं ट्रैकिंग में थी और माउंटेन्स में थी. पर्वत और पहाड़ों पर थी, पहाड़ी पर थी. मैं पहाड़ी पर थी. ओके, आना, तुम कहाँ थी सैटरडे को? मैं बनाती घर में थी. मैं घर में थी. मैं घर में, no, but I wanted to say estaba preparando comida. मैं So, खाना मैं बनाती थी. खाना बनाती घर थी. में थी. El verbo siempre va al final. मैं घर में खाना बनाती थी. मैं घर में खाना बनाती थी. Muy bien. Pero ahorita estamos viendo el verbo honar en pasado como verbo principal. Aquí el verbo que estás usando es banana, no hona. Y la pregunta es, ¿dónde estabas? No, ¿qué hacías? मैं तुम कहाँ थी? Exacto. No, no diga, तुम क्या करती थी? ¿Qué hacías? तो तुम कहाँ थी? मैं घर में थी. मैं घर में थी. तुम क्या करती थी? ahí sería, मैं खाना बनाती थी. तुम क्या करती थी? मैं खाना बनाती थी. ओके, पिछले por ejemplo, Rebeca, पिछले दिसंबर तुम कहाँ थी? पिछली क्रिसमस पर तुम कहाँ थी? Se pone mute otra vez. मैं अपने फैमिली में थी. मैं अपनी फैमिली के साथ थी. Con la familia, no en la familia. En hindi decimos con la familia. मैं अपने परिवार के साथ थी. मैं अपने परिवार के साथ थी. muy bien. Giselle, तुम कहाँ थी दिसंबर में? पिछले दिसंबर में मैं ग्वाटेमाला में थी. पिछले दिसंबर मैं ग्वाटेमाला में थी. Disember में puede ser y podemos quitar me también. Especialmente cuando se trata de días y meses a veces, ¿no? पिछले दिसंबर में ग्वाटेमाला में थी. सोफी, तुम फरवरी में कहाँ थी? मैं फरवरी यूनाइटेड स्टेट्स में थी. मैं फरवरी में यूनाइटेड स्टेट्स में थी. Muy bien. Es bastante fácil. Simple. Thi. Todo es thi para femenino. Para masculino sería tha. Y la pregunta sería para masculino, ¿तुम कहाँ थे? ¿Dónde estabas? ¿तुम कहाँ थे? ¿Dónde estabas? O ¿आप कहाँ थे? ¿Usted dónde estaba? Entonces, una vez que ya queda que siempre es thi, se vuelve más fácil hacer algunas frases. Por ejemplo, पहले, antes, ¿no? पहले मैं फुटबॉल खेलता था, अब मैं टेनिस खेलता हूँ.
पहले मैं फुटबॉल खेलता था, अब मैं टेनिस खेलता हूँ. ¿Entendieron, no? पहले es antes, ¿no? और अब vamos a usar eso. Aquí es. Así es. पहले मैं फुटबॉल खेलता था, अब मैं टेनिस खेलता हूँ. पहले मैं फुटबॉल खेलता था, अब मैं टेनिस खेलता हूँ. ¿Se le claro? पहले मैं इंडिया में था और भारत में रहता था, अब मैं मेक्सिको में रहता हूँ. Antes vivía, पहले मैं भारत में रहता था, रहना es vivir, residir. अब मैं मेक्सिको में रहता हूँ. No cambia nada. Femenino sería पहले मैं फुटबॉल खेलती थी, अब मैं टेनिस खेलती हूँ. पहले मैं भारत में रहती थी, अब मैं मेक्सिको में रहती हूँ. Solo estamos cambiando हूँ con थी o था. Entonces la pregunta puede ser, पहले तुम क्या करती थी, अब तुम क्या करती हो. Ok, esa es la pregunta. Para practicar un poquito. पहले तुम क्या करती थी, अब तुम क्या करती हो. 3 frases cada quien va a decir, ¿ok? ¿Quién empieza? Ok, voy por números. Voy por cómo van apareciendo. Govinda, पहले तुम क्या करते थे, अब तुम क्या करते हो. 3 frases. Pele, es que la puedo ver, ¿puedo poner la pantalla? No, ya no. Pero está preguntando qué hice antes y qué hago ahora. No. ¿Qué hacías antes y ahora qué haces? Por eso, ¿qué hago ahora? Sí. ¿Qué hacías antes? 3 frases, Entonces, cosas podría muy decir, simples. Perdón, profe, ¿podría pasar al final para...? Ok, Angeli. Está bien, sí. Angeli, por favor. ओके. पहले मैं बॉलीवुड डांस करती थी, अब मैं सालसा बचाता डांस करती हूँ. 3 frases. Oh. Okay. पहले मैं I don't know how to say. ¿Cómo se dice vegetarian? Vegetarian. शाकाहारी. Okay. पहले मैं वेजिटेरियन खाना खाती थी, अब मैं मीट खाती हूँ. Una más. पहले मैं I don't know, ¿cómo se dice correr? दौड़ना. पहले मैं दौड़ना करती थी, No, दौड़ती थी.
पहले मैं दौड़ती थी, अब मैं चलती हूँ। Muy bien. Ría, Tres frases, ¿verdad? por favor. Él me ¿Por qué no cole- está tu cámara, Ría? ¿Hay algún problema técnico? No, es que recién me uní a la clase. ¿Podrías, por favor, prender tu cámara? Sí, sí. Ah. Mientras puedes ir diciendo frases. Ahí se ve, ya. पहले मैं कॉलेज जाती थी। जाती थी. अब मैं वर्क करती हूँ। पहले no sé qué más decir. पहले मैं video games खेलती थी। खेलती थी. अब मैं video games खेल नहीं हूँ। पहले मैं सीखी थी। अब मैं डांस ¿Cómo diría que lo estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo. Estamos viendo presente simple. सीखती हूँ. Ok. Presente simple, ¿qué es? Quitamos la na del verbo y ponemos ti con hu. Pasado es igual, quitamos la na, ponemos ti, en vez de hu sería ti. Okay. अब मैं डांस सीखती हूँ. Muy bien. Sophie. हाँ, पहले मैं मेक्सिको सिटी रहती थी। मेक्सिको सिटी में रहती थी। हाँ। और अब मैं लियोन में रहती हूँ। पहले मैं बास्केटबॉल खेलती थी, अब मैं नाचती हूँ। पहले मैं बहुत टोर्टिल्las खाती थी और अब मैं बहुत सब्जियां खाती हूँ। Muy bien, tu mamá ha de estar orgullosa. Ajá. Cas, las mamás siempre dicen, ¿no? Come bien. Cas. Ok. पहले मैं चाय पीती थी। अब मैं कॉफी पीती हूँ। Perfecto. पहले मैं जल्दी सोती थी। अब मैं देर सोती हूँ। देर से. जल्दी y देर से. Okay. पहले मैं पुebla में रहती थी। अब मैं मेक्सिको सिटी रहती हूँ। मेक्सिको सिटी में रहती हूँ. मेक्सिको सिटी में. Muy bien. Muy bien. Rebeca. Estás en mute, Rebeca. Perdón. पहले मैं सोडा पीती थी, अब मैं नहीं पीती हूँ। पहले मैं फास्ट फूड खाती थी, अब मैं नहीं खाती हूँ।
पहले मैं ज़्यादा सोती थी, अब मैं कम सोती हूँ। Muy bien. Ana जी? पहले टेनिस खेलती थी और अब मैं योगा खेलती हूँ। योगा करती हूँ। योगा करती हूँ। पहले गुस्सा खेलती थी। ¿Qué es खेलती? Hilna es jugar. Tú lo que quieres decir es karna, hacer. करना। करती थी, अब मैं crying हूँ। अब मैं शांत हूँ, soy tranquila. Ay, sí. Eso no quise decir, pero ok. पहले dancing करती थी, अब mantra japa करती हूँ। Muy bien. Aquí una cosa. En hindi, ¿cómo? Nada. Dime. No, tú dime. Entonces, en hindi, muchos de los estados de ánimo no decimos yo, sino a mí. Entonces, está bien decir मैं गुस्सा करती हूँ, ¿sí? Pero más correcto es मुझे गुस्सा आता है, me llega, ¿sí? En vez de decir yo me enojo o yo hago el enojo, dice me llega el enojo. Entonces pueden decir पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मैं शांत हूँ o अब मैं. Pero entonces sería a ti, ¿no? No, ata, porque gussa es masculino. Y no tiene Okay. que ver con uno, sino गुस्सा. Sí. पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता. Puede ser. Mucho se habla con mucho en vez de me. Perfecto. Sí, Giselle. पहले मैं ब्राजील में रहती थी, अब मैं अमेरिका में रहती हूँ। पहले मैं रोज पुर्तगाली बोलती थी, अब मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। पहले मैं आम खाती थी, अब मैं सेब खाती हूँ। Muy bien. Ya, Govinda ya se fue cuando le tocaba. Ok. Entonces, vamos a platicar un poquito más. ¿Va? ¿Quién falta? Nadie, ¿no? Ok. पहले क्या होता था जो अब नहीं होता? पहले क्या होता था जो अब नहीं होता. ¿Ok? Antes que Hona es suceder también. ¿Qué pasaba antes que ahora ya no pasa? पहले क्या होता था जो अब नहीं होता? Entonces podemos decir cosas sencillas como puede ser individuales o en general, ¿no? Y पहले puede ser hace 5 años, 10 años, 20 años, lo que quieran. पहले क्या होता था जो अब नहीं होता? Antes que pasaba lo que ahora no pasa. Por ejemplo, पहले लोग चिट्ठी भेजते थे. भेजना, mandar o enviar. चिट्ठी, carta. Antes mandaban cartas. अब नहीं भेजते. ठीक है? पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, अब नहीं
भेजते o अब चिट्ठी नहीं भेजते. Ahora ya no mandamos. Así, más o menos. Algo. O puede ser, perdón, puede ser también lo que pasa ahora y antes no pasaba. Puede ser eso también. Estamos practicando. Sí, por favor, continúe. पता नहीं कैसे कहते हैं. अब लोग कागज अखबार पढ़ते थे. अब लोग स्क्रीन पर अखबार पढ़ते हैं. ठीक है. पहले लोग No sé cómo decir कागज का अखबार las पढ़ते noticias. थे. Sí, कागज कागज का es papel. पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अब स्क्रीन पर अखबार पढ़ते हैं. Muy bien, ¿qué más? पहले मेक्सिको में यह महीने este mes. sigue. Okay. पहले मेक्सिको में यह महीने गर्मी नहीं थी. और अब बहुत गर्मी है. Ok. En ese caso, igual, en vez de गर्मी थी, गर्मी होती थी. El verbo होना también se usa como cualquier otro verbo. पहले मेक्सिको में मई में ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी होती है. पहले मेक्सिको में मई में ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी होती है. अब लोग सब कुछ ओके. अब लोग सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं. मंगाना पेदीर. अब लोग सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं. पहले दुकान पर जाते थे. Antes iban a las tiendas. अब लोग सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं. पहले दुकान पर जाते थे. ¿Qué más? पहले फोन कॉल्स होती थी, अब टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं. Muy bien. पहले फोन कॉल्स होती थी. Sí. पहले ग्रोसरी सब्जी से खरीदती थी, अब मार्केट से खरीदती हूँ. पहले सब्जी ग्रोसरी से खरीदती थी, अब मार्केट से खरीदती हूँ. ओके. पहले अमेरिका में एक बेटर प्रेसिडेंट थे, अब एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है. ओके. ¿Qué más? पहले बच्चे गली में खेलते थे, अब वे कंप्यूटर से खेलते हैं. पहले बच्चे गली में खेलते थे, अब computer. ¿Cuál computadora? Ahora teléfono inclusive.
No, cada vez es más, no. अब सिर्फ डिजिटल खेलते हैं। सिर्फ puede ser solo. पहले बच्चे गली में खेलते थे, गली calle. Antes jugaban en la calle, अब सिर्फ डिजिटल खेलते हैं, solo juegan digital. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? पहले बहुत बारिश होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। Pues en Ciudad de México es al revés. Ahora llueve mucho más, ¿no? Muchísimo más. Ajá. Pero bueno, ajá. पहले बहुत पहले- बारिश होती थी, अब कम बारिश होती है। पहले बहुत बारिश होती थी, अब कम बारिश होती है। ¿Qué más? पहले oh, go ahead. Sí, बस। पहले ajá. भारत में हवा ज्यादा साफ थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हाँ, पहले भारत में हवा थोड़ी साफ थी, अब बहुत पॉल्यूशन है। प्रदूषण, पॉल्यूशन इन हिंदी sería प्रदूषण। पहले भारत में हवा थोड़ी साफ थी, अब बहुत प्रदूषण है। Muy bien. Hola, Carlos. Estamos practicando pasado y presente. ¿Qué pasaba antes que ahora no pasa? O ¿qué pasa ahora que antes no pasaba? Cualquier de los dos. A ver, cuéntanos 2, 3 frases. Sí, आजकल तो बहुत गर्मी होती है और लेकिन पहले मेक्सिको से शहर में इतनी गर्म नहीं था। Ajá, aquí está esa frase, justo. ¿Qué más? मुझे ऐसा लगता है कि पहले की मतलब कुछ ज़माने पहले पैसे कमाने के लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल होता है। Ok, पैसा कमाना es ganar dinero. ajá. Como to earn money, ¿no? Eso sería ganar dinero, ganarse la vida, si queremos llamar. पैसा कमाना। पहले पैसा कमाना आसान था, अब मुश्किल है। आसान, मुश्किल। आसान es fácil, मुश्किल es no fácil, o sea, difícil. पहले पैसा कमाना आसान था, अब पैसा कमाना मुश्किल है। Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Síganme platicando de antes y ahora un poquito. कुछ महीनों पहले मेट्रो थोड़ा सा और जल्दी से चलती थी या मेट्रो की गाड़ी आती थी मतलब मेट्रो की गाड़ी आती थी तो थोड़ा सा जल्दी से आती थी, लेकिन आज बहुत धीरे से चलता है। पहले मेट्रो diríamos जल्दी आती थी, अब देर से आती है। ओके, पहले मेट्रो जल्दी आती थी, venía rápido,
अब देर से आती है। अब देर से आती है। जी सर। पहले लोग ज्यादा स्वस्थ खाना खाते थे। अब लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड उपयोगी खाना। ओके, हाँ। खाते पहले हैं। लोग हेल्दी खाना खाते थे, अब इंडस्ट्रियलाइज या फिर प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं. Muy bien. No sé, Angélica, escribiste eso, pero todos estamos desde las 4. Entonces el problema no estaba con link. ¿Ok? Ok. ¿Alguien tuvo problema con entrar en cuando ya empezó? No, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? voy a intentar. Ajá. Ya. पहले शादियाँ बाहूम बैठे थे. ¿Pele क्या? शादियाँ, matrimonios. शादियाँ, ajá. शादियाँ बहुत बैठे थे. ¿Bahut qué? No te entiendo, ¿cómo? बहुत बैठे, tenía muchos hijos. Ok, ajá. Pero aquí no sería matrimonio. पहले लोग, la gente. Ok. पहले लोग बहुत बैठे थे. Ajá. अब वे कुछ और कोई नहीं. Ajá. Diríamos de esa forma. पहले लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे, अब कम या कोई बच्चा नहीं होता. Eso sería. En vez de tener, como no existe el verbo tener, ¿no? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, si alguien dice, मेरे 2 बच्चे हैं, en vez de decir, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे, míos 2 hijos son. Entonces, पहले लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे. Antes había más niños de gente, o sea, eso sería literal, pero lo que quiere decir es, pues antes tenía más niños o más hijos. अब कम या कोई बच्चा नहीं होता. Ahora tiene menos o ninguno. बिल्कुल, हो सकता है. ¿Qué más? पहले रात में वर्क सकते हैं, अब ये dangerous है. पहले रात में घूम सकते थे. वॉक करना और घूमना, और वॉक कर सकते थे. अब ¿qué decía segunda parte que era ría? Dangerous. अब खतरा है. Ahora es peligro, digamos, o peligroso. पहले रात में घूम सकते थे, अब खतरा है. También mucho depende, ¿no? En tu colonia puede ser, en mi colonia puede ser, en algo, ¿no? O te refieres a algunas partes de la ciudad. Algunas partes de la ciudad. Okay. Puede decir, ¿no? कि पहले यहाँ आराम से घूम सकते थे रात को, अब थोड़ा खतरा है. जी सर. पहले दुनिया में ज्यादा पशु थे, अब कम पशु हैं. ओके. पहले दुनिया में ज्यादा पशु थे. Pashú o जानवर es lo mismo. Animales. Para que tengamos las dos palabras. पहले दुनिया में ज्यादा पशु थे, अब no es कम, es कम. Menos, ¿no? अब कम जानवर हैं. Ahora hay menos animales. Ok.
Sí, hay menos, algunos que se extinguieron, ¿a eso te refieres? Ok, हाँ, ok. Sí. तो पहले दुनिया में ज्यादा पशु थे, अब कम जानवर हैं. पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी. इतनी tanto. No había tanta, no, population. पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, आजादी से पहले भारत में अंग्रेजी शासन था. शासन estado, gobierno. आजादी से पहले, antes de la independencia, भारत में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी राज था. había gobierno de los británicos. मेक्सिको में आजादी से पहले किसका शासन था? स्पेनी की राज या स्पेनी से की शासन था. किसका? किसका? स्पेनिश के शासन. तो किसका? देखिए, मेक्सिको में आजादी से पहले किसका शासन था? स्पेनिश शासन था. Gobierno era España, podemos decir. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, yo no sé que esto es correcto o no, pero पहले जीवन की गति धीमी थी, अब तेज है. Like, la vida era más como lentamente slow. पहले जीवन की गति धीमी थी, अब तेज है. गति es velocidad. Antes la velocidad o la vida, digamos, estaba más lenta, ahora es más rápida. Ok. पहले जीवन की गति धीमी थी, अब तेज है. पहले तुम हिंदी नहीं बोलते थे, वो बोलती थी, अब हिंदी बोलती हो. ¿No? पहले, pues era hace 10-15 años, पहले तुम हिंदी नहीं बोलती थी, अब हिंदी बोलती हो. पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं. पहले बहुत अब बहुत गाड़ियां हैं, लेकिन पहले इतनी नहीं थी. Otra vez, Rebeca. अब बहुत गाड़ियां हैं. गाड़ियां, ओके. पहले लेकिन पहले इतनी नहीं थी. पहले, अब बहुत गाड़ियां हैं. Es otra forma de decir. अब बहुत गाड़ियां हैं, पहले इतनी नहीं थी. Ahora hay muchos vehículos. Antes no había tantos. Por ejemplo, अब बॉलीवुड में बहुत गालियां हैं और होती हैं. पहले इतनी नहीं थी.
Galia, groserías, ¿no? Que ahora hay más. Antes no había tantas. अब बॉलीवुड मूवीज में बहुत गालियां होती हैं, पहले इतनी नहीं थी। पहले मूवीज सिनेमा में होती थी, अब OTT पर होती हैं। पहले मूवीज सिनेमा में होती थी, es थी, no es थी। Antes las películas en el cine, लेकिन अब OTT और प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos muy bien. पहले मेरे दादाजी थे, अब नहीं है ना, muchos o परदादा si quieren। पहले मेरे दादाजी थे, अब नहीं हैं। Entonces, cuando decimos zinda the, está bien, pero ya no hace falta, el contexto dice, अब नहीं है। दादाजी, abuelo, antes, como la traducción sería estaba o estaba vivo, अब नहीं है, ya no está। पहले मेरे दादाजी थे, अब नहीं हैं। पहले मेरे दादाजी मुझे पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। Cuando es negación en presente se puede evitar el verbo होना। पहले मेरे दादाजी मुझे पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। पढ़ाना है enseñar, teach। ¿Qué más? पहले मैं छोले नहीं खाती थी, अब मैं छोले खाती हूँ। Muy bien। पहले मैं छोले नहीं खाती थी, aquí puso कहती। पहले मैं छोले नहीं खाती थी, अब मैं छोले खाती हूँ। पहले मैं मम्मी की ओमा simplemente नहीं सुनता था, अब भी नहीं सुनता। ¿Sí? Y sunna es obedecer, no es escuchar। Y sunna o kimana quiere decir obedecer। पहले mamá की नहीं सुनता था, antes no obedecía mi mamá, अब भी नहीं सुनता, todavía no। También puede ser, ¿no? Lo que había antes y continúa, no tiene que ser solo eso, ¿no? Practicar el pasado y el presente। पहले मैं योगा करता था, अब भी करता हूँ। पहले मैं नाचता था, अब भी नाचता हूँ। पहले मैं हिंदी बोलता था, अब भी बोलता हूँ। Entonces, अब ya saben, भी es también, ¿no? Es como la repetición de lo mismo, भी। Entonces, पहले भारत में पहले गर्मी होती थी, अब भी
होती है. Antes hacía calor en la India y ahora también se hace. पहले और भारत में पहले गर्मी होती थी, अब भी होती है. अब लोग लड़ते हैं, पहले भी लड़ते थे. लड़ना, pelear. अब युद्ध होते हैं, पहले भी होते थे. युद्ध, guerras. Ahora hay guerras, antes también había. अब युद्ध होते हैं, पहले भी होते थे. ¿Qué más? ¿Qué más? पहले मैं कसरत करती थी, अभी करती हूँ. पहले मैं कसरत करती थी, अब भी करती हूँ. अब भी, अभी. Es una pequeña diferencia. Abhi es en ese momento. Abhi puede ser ahora también. Esos días también. ¿No? Estos días también. En ese momento también. Pero cuando dicen abhi bhi, es casi lo mismo que ab bhi. También ahí se habla así. Abhi bhi karti hu. पहले करती थी, अभी भी करती हूँ. ¿Ok? Antes hacía, todavía lo hago. Entonces, abhi bhi और ab bhi, los dos existen y también existe abhi. Abhi es lo que diría aquí, ¿no? Ahora mismo, ahorita. Abhi, abhi करो. होमवर्क कब करूं? अरे अभी करो. मैं घर कब जाऊं? अभी जाओ. मैं तुमसे कब मिलूं? अभी मिलो. मैं काम खत्म कब करूं? अभी करो. En ese momento. Ahora mismo, eso sería. Más o menos. मैं पहले करती थी, अभी भी करती हूं. मैं पहले इंडिया जाता था, अभी भी जाता हूं. मैं पहले भारत जाता था, अभी भी जाता हूं. मैं पहले हिंदी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूं. तुम पहले हिंदी सीखती थी, अभी भी सीखती हो और सीखते हो. तुम पहले खुश थी, अभी भी खुश हो. तुम पहले खुश थी, अभी भी खुश हो. Entonces, lo que es hूं en presente, en pasado es था o थी. Muy simple, muy simple. Y presente simple es ti o ta, eliminando la na del verbo. Y hूं queda igual. मैं खाता हूं, मैं जाती हूं, मैं आती हूं, मैं बैठती हूं, मैं बोलती हूं, मैं चलती हूं, मैं महसूस करती हूं. Y le quitamos hूं y podemos poner थी o था. मैं करता था, मैं करती थी. मैं जाता था, मैं जाती थी. मैं बोलता था, मैं बोलती थी. मैं चलता था, मैं चलती थी. मैं देखता था, मैं देखती थी. Y es lo mismo para otras personas también, no solamente para primera. Segunda y tercera persona también. Es lo mismo. Ta o ti o te queda. Eso no cambia. Y después, en vez de hu, ho, he, va ta, ti o te o ti. Por lo general, cuando hay nasalización al final, la conjugación del verbo quiere decir que es plural. Y segunda persona se usa como plural. ¿Sí? Segunda persona se usa como plural. तुम हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, o आप जाते हैं, आप जाती हैं, आप गई. Todo eso, aunque sea una persona, usted
o tum se usa como si fuera plural. Así se conoce. Hay un tú, pero aquí no practicamos mucho. Preferimos mucho más tum o आप. Muy bien. ¿Alguna, digamos, pregunta o algo? Siempre, ¿no? Okay. Entonces, aquí estaba viendo que a ver si hay algunos, un poquito de verbos. Hona ya sabemos. Hona es, ¿no? Ser o estar, suceder, acontecer y todo eso puede ser. To be sería más cercano, digamos. Karna es hacer. Y el verbo karna y hona son como casi podemos decir el alma. En muchos idiomas, del hindi también. Hona es lo que sucede y karna es lo que se hace. Entonces, karna podemos decir es un verbo transitivo. Siempre va a haber, ¿no? Karna, haces algo. Y hona es un verbo intransitivo. Sucede. No necesariamente tiene que haber un objeto directo o indirecto. Y hay muchos verbos, muchísimos verbos que se hacen con hona y karna, como en español también. Entonces, por ejemplo, safai karna, limpiar. Safai karna. Muchos verbos se hacen usando karna y hona. Kehna sería decir. तुम्हें क्या कहना है o तुम क्या कहते हो? ¿Qué dices? Eso sería. ¿Qué dices? तुम क्या कहते हो? आज गर्मी है या नहीं? ¿Qué dices? ¿Hace calor o no? तुम क्या कहती हो? तुम क्या कहते हो? वह बस अपनी बात कहता है. Él dice solo lo que piensa. वह बस अपनी ही बात कहता है. Hay muchos, digamos, muchos significados del verbo कहना. No es solamente el decir. Pero sí, lo más neutro puede ser decir. सच कहना, सच नहीं कहना, झूठ कहना, झूठ नहीं कहना, decir la verdad, no decir la verdad. Pana. Pana puede ser, sí, obtener, pero también en un contexto, también pana puede ser lo que sería poder. To be able to. En inglés sería can, ¿no? मैं हिंदी बोल पाता हूँ. मैं थोड़ी हिंदी बोल पाता हूँ. También existe. Pana también puede ser. Es casi lo mismo que sakna. मैं हिंदी बोल सकता हूँ. Puedo hablar hindi. मैं हिंदी बोल पाता हूँ. जाना, ir. जानना, saber puede ser. En hindi coloquial, digamos, cotidiano, no se usa tanto janna, se usa más pata hona, malum hona. Pata hona. Entonces, en vez de decir मैं जानता हूँ, मुझे पता है. Es más hindi. मुझे पता है es un poco más hindi que मैं जानता हूँ o जानती हूँ. Entonces, जैसे तुम्हें पता है जल्दी ही बारिश होने वाली है. तुम्हें पता है मेक्सिको में जल्दी ही बारिशें शुरू होने वाली हैं. Sabes que ya pronto van a empezar las lluvias. ¿No? तुम्हें पता है. तुम्हें पता है कि इंडियन एम्बेसी पोलैंको में है. तुम्हें पता है इंडियन कल्चर सेंटर इंडियन एम्बेसी के पास है. तस्वीर पता. जानना está bien, pero मालूम होना o पता होना es mejor. Lena. Lena es tomar, puede ser. देखना.
ver, ya sabemos. Ana, venir, llegar. Sochna, pensar. Entonces, ¿तुम क्या सोचते हो? Sí, está bien, pero mejor es, ¿तुम्हें क्या लगता है? ¿Qué te parece? En vez de decir, what do you think? ¿Qué piensas? En hindi decimos más, ¿तुम्हें क्या लगता है? ¿तुम्हें क्या लगता है? दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, va a bajar la contaminación en Delhi. ¿तुम्हें क्या लगता है? लगना se usa un poquito más que sochna en ese sentido. देखना, ver, चाहना, es como querer. देना, dar. इस्तेमाल करना es como usar más o menos, usar o utilizar algo. Y se usa más o menos como en español. Solo puede ser, por ejemplo, ahora muchas veces en la pregunta está si se usa o no alguna posposición. Por ejemplo, तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? ¿Qué usas para ir a la universidad? क्या? O तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करती हो? ¿Qué pluma usas para? ¿no? लिखने के लिए तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करती हो? Pero también es hacer uso de. का इस्तेमाल करना es mejor. तुम कौन से पेन का इस्तेमाल करती हो? तुम कौन सा फोन o कौन से फोन का इस्तेमाल करती हो? तो hacer uso de का इस्तेमाल करना. ढूंढना, buscar. Batana, decir o narrar también puede ser de alguna manera. Contar puede ser. Batana, contar. Puchna. Entonces puede ser puchna, ¿no? Preguntar algo, o se puchna, preguntar a alguien. Entonces no usamos tanto ko puchna, preguntar a, sino se puchna. Eso es más correcto. अपने भाई से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, अपने दोस्त से पूछो. Se पूछना es más correcto que को पूछना. काम करना. Hay una diferencia entre kam y काम. Kam es menos, काम es trabajo. जैसे काम करना, trabajar. तुम कहाँ काम करती हो? तुम क्या काम करते हो? तुम कैसा काम करते हो? कैसा es como. लगना. Lagna se usa para muchas cosas. Lagna se puede usar, por ejemplo, tardar. तुम्हारे घर से यूनिवर्सिटी जाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है. लगना puede ser tardar. लगना, तुम्हें क्या लगता है? ¿Qué te parece? ठंड लग रही है, hace frío. Sentir también puede ser. Entonces, lagna es un verbo que se puede traducir o tiene muchos usos. और महसूस करना. Entonces, महसूस करना puede ser sentir. Pero muchas veces la gente habla लगना, ठंड लगना, en vez de ठंड महसूस करना. En vez de siento frío, decimos parece frío, más o menos. मुझे ठंड लगती है या मुझे गर्मी लग रही है. No, मुझे गर्मी महसूस हो रही है. Está bien, se puede usar महसूस करना también.
pero más así común es que se use lagna. De aquí, pero creo que pues, no hay ningún verbo que no supieran, ¿no? Casi todos han usado. Tal vez esté mal karna no tanto, Lurna, Jesús karna, pero el otro 16, 17 más o menos, creo que ya saben. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda en esos verbos? Yo No, nada ¿verdad? más en Puchna, ¿se puede usar Preguntar. como ek Puchna? ¿Qué es Como una Kushna? pregunta. ¿Qué es Kushna? Ok, Puchna, ok. Gracias. Sí, pero Sofía, ¿qué quiere decir? O sea, una pregunta, así como voy a hacer una pregunta. Ah, no decimos, puede decir, मुझे कुछ पूछना है. Ok. Ajá. Como decía, ¿no? De repente que, pues cada idioma tiene sus expresiones también, ¿no? Entonces, es muy común aquí, ¿no? Dice, una pregunta, ¿no? O sea, en la India, mera exaval है, no. Sí, se entendería y todo, pero en la clase, por lo menos yo no he escuchado, no me acuerdo en la escuela ni usar eso que alguien dijera. Simplemente dice, मैम कुछ पूछना है. Quiero o tengo que, ¿no? Eso sería. Quiero preguntar algo. En vez de, tengo una pregunta. Como no hay verbo tener, entonces hay otra, porque cuando dices una pregunta, ¿qué quiere decir? Tengo una pregunta, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí. En hindi, no. En hindi diríamos, tengo que, o necesito. Eso sería implícito. मुझे कुछ पूछना है. En vez de mera ek सवाल है. Repito, podría ser una pregunta, ¿no? एक सवाल है. मेरा एक सवाल है, pero es más común मुझे कुछ पूछना है. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. Podría ser. También. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Perdón, Yogi, nada más añadiendo a lo que explicabas, creo que también suelen preguntar como en el subjuntivo, ¿no? Aunque creo que tal vez no lo han visto, lo de ek baat puchun. एक बात पूछूं, हाँ. एक बात पूछूं. ¿Pregunto algo? También puede ser. Allá, puchun es con lo que sería el subjuntivo, más o menos. ¿No? Entonces, ¿qué es muy común el uso de subjuntivo? Como para amabilidad. Los que, digamos, por ejemplo, cuando viajamos a la India y no vemos casi nada, por favor, gracias, etcétera, eso está en el uso de subjuntivo, ¿no? En vez de la palabra gracias y por favor, etcétera, está en el subjuntivo. आप आए, en vez de decir आप आइए, venga, dice आप आए, ¿qué quiere decir? ¿No? Te pido que vengas, más o menos, o le pido que venga, más o menos. आप आओ. Entonces, en el tono, en el uso de subjuntivo está la educación o la amabilidad. Entonces, me hace puchu. ¿No? Quiere o me permite que le haga una pregunta, eso puede ser, ¿no? Justo. Me puchu, que son 3 palabras nada más, ¿no? O simplemente puchu, también puede ser. En esas 2 palabras hay toda esa frase. Me permite que le haga una pregunta, por favor. Eso, digamos, con 2 palabras ya está implícito todo el resto. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a platicar un poquito más antes de seguir. Por favor, platíquenme en hindi lo que quieran. Entre ustedes, no tienen que
porque es un espacio donde podemos hablar y escuchar hindi. काश तुम कहाँ हो, ऑफिस में या घर पर? laboratory में. हाँ, मैं लेबोरेटरी में हूँ. हाँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ¿Qué estás haciendo allá? Además de aprender hindi. मेरी investigación. मैं रिसर्च कर रही हूँ. मैं रिसर्च कर रही हूँ. हाँ. Entonces, además es के अलावा हिंदी के अलावा और हिंदी सीखने के अलावा, हिंदी क्लास लेने के अलावा तुम लैब में क्या कर रही हो? मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ. muy bien. और कार्लोस तुम कहाँ हो? घर पर या फिर कहीं बाहर? नहीं, अभी तो मैं घर पर हूँ. मैं आजकल मैं जानू के साथ रह रहा हूँ. तो अभी तो आजकल तो बोनाविस्टा में रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा देर से ज्वाइन कर पाया क्योंकि मैं GTICC से वापस आया. तो इसीलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने आज. लेकिन आज श्रीतमा दीदी के पास चला गया और कुछ थोड़ा सा कातक क्लास ले लिया मैंने. तो बहुत अच्छे. ये आज ऐसा दिन हुआ. अभी तो शायद 20 या 30 मिनट में वापस निकला हूँगा. वापस निकलोगे? वापस निकलूंगा मैं क्लास देने के लिए. अच्छा, बहुत नाम जानेंगे आज. उनान? हाँ. कौन से कैंपस में? नहीं, वो कैंपस में नहीं, बस CCU में जाना है, Centro Cultural Universitario में. perfecto, CEU में. बहुत अच्छे. और सोफी तुम कहाँ हो? ¿Dónde estás tú? मैं अपने घर हूँ. मैं अपने घर पर हूँ. मैं अपने घर में हूँ. मैं अपने घर में हूँ. तुम्हारे घर में और कौन है इस समय en ese momento? Okay. Primera cosa, cuando hablamos en hindi, no es información de su casa y nada, ¿eh? Pueden inventar lo que quieran. O sea, no nos interesa eso. Si quieren, adelante, pero solo para aclarar. हाँ, सोफी, हमारे घर में कौन है? ¿De quién está en mi casa? Cuando decimos con, क्या, कहाँ, entonces es como si fuera plural. ¿Quiénes están en tu casa? तुम्हारे घर में कौन है? मेरी साथ मेरी पिता है. मेरे साथ मेरे पिता हैं. और मेरे बिल्ली है. मेरी बिल्ली है. तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अल्बर्टो. मेरे पापा नाम है मेरे पापा का नाम अल्बर्टो है. और तुम्हारी बिल्ली? सिरिला है. शिरीला? हाँ. शिरीला का मतलब क्या होता है? उसकी नाम viene de. Tú ahora, si quieres usar un poquito de español, un poco de hindi, no pasa nada. Vamos. उसका नाम viene de एक किताब है. उसका नाम एक किताब से है. से फ्रॉम, नो दे. उसका नाम एक किताब से है. लेकिन चिरीला का मतलब क्या है? Significado. मतलब significado. ¿Cómo puedo decir según yo? मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से little lady. Okay.
मेरे हिसाब से छोटी lady, छोटी porque aurat no suena como lady. Entonces, ok, छोटी मैडम si quieren. En hindi van a entender mejor en vez de छोटी औरत. ओके, तो चिरीला का मतलब छोटी मैडम होता है और छोटी लेडी होता है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अंजलि, तुम कहाँ पर हो? मैं अपने घर में हूँ. ओके. लेकिन 2 मिनट में निकलना होगा. 2 मिनट में निकलना होगा. muy bien. ओके. और अंखेलिका, तुम कहाँ हो? मेरे घर में हूँ, अपनी घर में. अमेरिका में कौन सी सिटी में? सेरिटोस में. सेरिटोस, ओके. और अंखेलिका, तुम कहाँ पर हो? मैं रेस्टोरेंट में हूँ. ओके. मैं रेस्टोरेंट में हूँ. तुम रेस्टोरेंट तुम्हारा है? हाँ जी. अच्छा. मैं अपने रेस्टोरेंट में हूँ. जी. तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हमारे रेस्टोरेंट ईस्ट एंड वेस्ट. हमारे रेस्टोरेंट का नाम ईस्ट एंड वेस्ट है. बहुत अच्छे. Ciudad Sagún Hidalgo में है. सिर्फ 2 बजे 2 घंटे के मेक्सिको सिटी में है. सिर्फ मेक्सिको से सिर्फ 2 घंटे दूर है. 2 घंटे दूर है. मेक्सिको से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है. हाँ जी. ओके. अंजलि, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो. ओके. Los que de repente tienen que ir un poco antes, entonces no se preocupen, ¿no? A veces pasa eso. Rebeca, तुम कहाँ पे हो और क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे में हूँ. अभी अपने कमरे में हो. ओके. तुम्हारे कमरे का रंग कैसा है? रंग, कलर. तुम्हारे कमरे का रंग क्या है? वो किस रंग का है? कमरे वाइट है. सफेद. मेरे कमरे की दीवारें paredes. मेरे कमरे की दीवारें सफेद रंग की हैं. मेरे कमरे की दीवारें सफेद रंग की हैं. ओके. तुम्हारे कमरे में और क्या क्या है दीवारों के अलावा? मेरे कमरे में एक बिस्तर है, एक कुर्सी है, मेरी किताबें हैं, में एक लैपटॉप है. मेरे कमरे 2 खिड़की है, खिड़की है, खिलौने है. ओके. और मेरे परिवार तस्वीर है, फोटोस. मेरे परिवार की तस्वीर है. मेरे परिवार की तस्वीर है. तुम्हें अपना कमरा पसंद है? हाँ, बहुत. क्यों? क्योंकि माय स्टाइल है. क्योंकि ये मेरा कमरा है. तुम्हारे घर में सबसे अच्छा कमरा किसका है? सबसे अच्छा, ला mejor. तुम्हारे घर पर सबसे अच्छा कमरा किसका है? ओ कौन सा है? ¿Cuál es la mejor habitación de tu casa? बालकनी है. क्या? बालकनी. ओके, eso sería espacio, balcony. तो मेरे घर में सबसे अच्छी जगह है, बालकनी है. और मुझे सबसे ज्यादा बालकनी पसंद है. muy bien. जिसेल, तुम कहाँ हो और क्या करती हो? क्या कर रही हो इस समय? मैं अपने घर पर एक दफ्तर में हूँ. ओके. puedes decir, मेरा ऑफिस मेरे घर में है. मेरा ऑफिस मेरे घर में है. Ahora, aquí no podemos usar
अपना, porque aquí el sujeto es la casa y de quién es la casa eres tú, son diferentes, ¿no? Entonces puede decir, मेरा ऑफिस मेरे घर में है, ओके, मेरा दफ्तर मेरे घर में है। तो इस समय तुम अपने दफ्तर घर में हो। हाँ जी। इस समय जिसेल अपने ऑफिस घर और दफ्तर घर में है। इस समय मैं दफ्तर में हूँ। ओके, ओके। हिंदी क्लास से पहले तुम क्या कर रही थी? मैं विश्वविद्यालय में काम कर रही थी। मैं विश्वविद्यालय में काम कर रही थी। और हिंदी क्लास के बाद? मैं कुछ खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही हूँ। लग रही है, हाँ जी। हिंदी क्लास से पहले मैं काम कर रही थी यूनिवर्सिटी में। हिंदी क्लास के बाद मैं कुछ खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। क्योंकि मुझे भूख लग रही है। Entonces, por lo general, cuando es mujer, ¿no? La frase termina en tercera persona, por lo general, a menos que estés refiriéndose a segunda persona, tú, ¿no? मुझे बताओ, ¿no? मुझे तुम, ¿no? Cuando es segunda persona, entonces sí es ho, pero he, o digamos ho o te, etc. Pero por lo general es tercera persona, ¿no? मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं कुछ खाना बनाऊंगी, Ok. ¿Algo más? No quiero dar un nuevo tema todavía. Vamos a ir tema por tema, digamos, ¿no? Que estamos prácticamente repasando. Porque la mayoría de los que estamos aquí, pues ya lo hemos visto. Presente, presente simple, presente, vamos a ver un poquito gerundio, ¿no? Pero sí en cada clase vamos a ver un o dos temas gramaticales. El resto es, yo quisiera que platicáramos mucho y también hiciéramos como, ¿no? Aprender más vocabulario. Más vocabulario. Y lo que sirve mucho es leer. Un poquito lean, cosas simples, si quieren, pero sirve mucho para el vocabulario. Si no, en la clase, pues por lo general es otra vez lo mismo. मैं खाती थी, मैं खाता हूँ, मैं जाती थी, मैं जाता हूँ, देखना, बोलना, pues típicos, sí, mismos 30, 40 verbos, lo que se usa, ¿no? Que sí, en eso se reduce muchas veces en nuestro día, pero hay otros verbos que se pueden usar para lo mismo. Entonces se enriquece muchísimo y eso está mucho más en hindi escrito, no tanto en hindi hablado, a menos que pues escuchemos a los que escriben. Eso también. Okay. So, voy a ver, cierren los ojos. Les voy a leer lo que escribimos. Y van sintiendo que van entendiendo. टेक्नोलॉजी लोगों की जगह नहीं ले सकती और लोग तकनीक और टेक्नोलॉजी की जगह नहीं ले सकते. En vez de decir मैं गुस्सा करता हूं, podemos decir मुझे गुस्सा आता है. पहले क्या होता था जो अब नहीं होता? पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, अब चिट्ठी नहीं भेजते. पहले मेक्सिको में मई में ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी होती है. अब लोग सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, पहले दुकान पर जाते थे. पहले फोन कॉल्स होती थी, अब टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं. पहले बच्चे गली में खेलते थे, अब सिर्फ डिजिटल खेलते हैं. पहले बहुत बारिश होती थी, अब कम बारिश होती है. पहले भारत में हवा थोड़ी साफ थी, अब बहुत प्रदूषण है. पहले पैसा कमाना आसान था, अब थोड़ा मुश्किल है.
पहले मेट्रो जल्दी जल्दी आती थी, अब देर से आती है। पहले लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे, अब कम होते हैं या बच्चे नहीं होते। पहले रात में घूम सकते थे, अब थोड़ा खतरा है। पहले दुनिया में ज्यादा पशु थे, अब कम जानवर हैं। पहले दुनिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। आजादी से पहले भारत में अंग्रेजी शासन था। मेक्सिको में आजादी से पहले किसका शासन था? स्पेनिश शासन, स्पेनियर्स का शासन था। पहले जीवन की गति धीमी थी, अब तेज है। पहले तुम हिंदी नहीं बोलती थी, अब हिंदी बोलती हो। पहले ऑनलाइन कक्षा नहीं होती थी, अब होती है। पहले ज्यादा गाड़ियां थी, अब इतनी नहीं। अब बहुत गाड़ियां हैं, पहले इतनी नहीं थी। पहले बॉलीवुड मूवीज में बहुत गालियां, अब बॉलीवुड मूवीज में बहुत गालियां होती हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। पहले मूवीज सिनेमा में होती थी, अब OTT पर होती हैं। पहले मेरे दादाजी थे, अब नहीं हैं। पहले मेरे दादाजी मुझे पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। पहले मैं छोले नहीं खाती थी, अब मैं छोले खाती हूं। पहले मैं मम्मी की और माँ की नहीं सुनता था, अब भी नहीं सुनता। भारत में पहले गर्मी होती थी, अब भी होती है। अब लोग लड़ते हैं, पहले भी लड़ते थे। अब युद्ध होते हैं, पहले भी युद्ध होते थे। पहले बहुत सी बातें जो मैं पहले करती थी, अभी भी करती हूं। Muy bien. Sí se entiende casi todo, ¿no? Sí. ¿No? Eso es. En gran parte es un buen ejercicio de repente cerrar los ojos y escuchar y cerrar los ojos y hablar. En vez de estar leyendo, digamos, lo que uno va practicando. Sí, podemos escribir primero, ¿no? Y tal vez 2, 3 veces leer y a ver qué me acuerdo. Se logra un poquito más confianza en sí mismo, digamos. Porque al fin y al cabo fuiste tú la que escribió, ¿no? Y poco a poco te vas aprendiendo y también recordando todo lo que sabes, aunque, digamos, haga falta un poco de práctica nada más. Vale. ¿Nada más? Entonces, como tarea podrían, ¿no? Escribir algo. Repito, no es tarea, no es, digamos, no es, pero está bonito, como un repaso ayuda. Y puede ser una continuación en la siguiente clase de lo mismo. Entonces, si pudieran escribir, no sé, diciendo, ¿no? ¿Qué pasa ahora que antes no? O qué pasaba antes que todavía pasa, o algún otro tema, pero que se use el presente y pasado simple. Quiere decir lo que se repite, lo que es habitual. Por lo general, la clase vamos a terminar 5:45, ¿no? Porque después tengo clase, entonces, para poder llegar o para descansar un poquito la voz. Perfecto. No hay nada más. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Muchas gracias. Bye bye. Bye. जल्दी मिलेंगे. शुक्रिया.